A very warm good afternoon to everyone and a very happy new year. Welcome to your study channel, Unacademy. Let's crack it. Let's have a preparation full of lot of practice and confidence for cracking your exam of GATE and ESE. So let's begin today's session. Before beginning, let me introduce myself once again to you. I am Arohi Malviya, MTech in Transportation, and I have 2.5 plus years of teaching experience in GATE and ES, and have mentored more than 6,000 students for GATE and ES, and also for JEE Mains and Advanced in mathematics. I myself have cleared, qualified for GATE and cracked PSC. Okay, so this is my code ARO10, which you can use to get access to your free special classes on Unacademy, and also you will get a 10% discount on your subscription. So you can avail this benefit by taking the use of this code. Now let me tell you a little bit about Unacademy and then we'll move on to our session quickly. So just download your Unacademy app, and there in the top left corner you will find your live session classes. You can have a look at those. You will get a notice how the teachers are teaching you, and also there are so many course contents being developed every day from top educators in their field, and that is the best part which has never happened ever in the country. So this is the thing, this part makes an academy unique and a great revolution in the field of teaching and learning for your competitive exam of GATE and ES. Okay, so in plus an iconic subscription, there are a lot of benefits. Okay, not only you get to learn with the top educators, you have interactive classroom, you have structured coursework and PDFs, live test, one-to-one interaction. In iconic, there are added advantage of getting a personalized coaching and personalized analysis and study planner as per your requirement and routine. So you get a complete study package. Okay, overall, you do not need to suffer for anything like notes or practice questions or from where to take guidance. This package will completely help you in your preparation. So what are you waiting for? Just go have a look at the plans. These are the plans for different month on the monthly basis. So choose the best which is effective for you. So you can use my code ARO10, which will help you to get a 10% discount, and you'll see the rates are now reduced. Okay, so 10% rates will be reduced, and this is an added advantage with best preparation to avail a discount on your study plan. In iconic as well, you can have avail this discount of 10% using my code. Iconic is best for students who are currently in their first and second year and trying to have a full-fledged plan for their preparation. So you can have a very effective planning with this Unacademy Iconic subscription, because you will get a one-to-one guidance right from the beginning of your preparation with a structured study plan from the best mentors. Okay, so that was about Unacademy and me. And since you know we have been studying your engineering mathematics, and previously we have looked into probability. Today we are going to forward with linear algebra. So the basics we have already covered with the important properties of determinant that are very important for you to remember, because as we move forward with your rank and system of equation, that will be needed. Okay, today in this lecture we are basically concerned with finding out the rank and solving the system of equation using your linear algebra operations. ठीक है, तो आज हम काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं, starting with your rank and then moving forward with how you determine rank using echelon form, what are the Gauss elimination operations you can perform, and how you can predict whether a system of equation has a consistent or an inconsistent solution based on its rank. ठीक है, so there are a lot of things we have to cover today. Let's move forward with our lecture. Okay. In the last class yesterday, जो हमने करी थी discuss, we have seen about your determinant and its important properties, right? Then we were here left with a few points on your inverse and
adjoint. Okay, so let me quickly have a recap for your inverse and adjoint, and then we will move forward with your rank determination. Okay, because inverse is important as we move forward for your rank. So inverse of a matrix, basically matrix का आपको पता है that if you have a square matrix, then only you can find the inverse of that matrix. And this is how we are representing your inverse. Basically, the definition of inverse says adjoint of A upon determinant of A. Okay. So what is adjoint of A? Now, inverse, first condition for the inverse to exist is the determinant of A should not be 0. This is the only condition. Otherwise, for a square matrix, a determinant will, the inverse will definitely exist. Now, what is the adjoint of A? So, if you remember yesterday, I told you about the cofactor matrix. Basically, adjoint of A is nothing more than the transpose of a cofactor matrix. Okay, so you transpose the cofactor matrix, that gives you the adjoint. Okay, so here are a few properties. Now, if you remember cofactor matrix हमने कैसे निकाली थी? For finding the cofactor matrix, we first determined the minor and then we multiplied each element of the minor with -1 to the power I plus j. Okay, now when you take the transpose of that matrix, that will give you the adjoint. So the properties of an adjoint are, if you take adjoint of A into A, okay, so matrix multiplication of adjoint of A into A or A into adjoint of A, they give you determinant of A to the power n into identity matrix. Okay, ये बहुत important property है, that when you multiply adjoint with the matrix itself, adjoint of that matrix with the original matrix, you get determinant of A to the power n into I. तो अगर आप थोड़ा सा logically सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि ये determinant of A to the power n कैसे आ रहा है, because cofactor matrix की एक corresponding रो को आप corresponding A मैट्रिक्स के रो से मल्टीप्लाई करते थे तब एक डिटर्मिनेंट आता था. ओके, डिटर्मिनेंट मींस A आता था. अब अगर आप हर एक करस्पॉन्डिंग रो को हर एक करस्पॉन्डिंग रो से मल्टीप्लाई करोगे एंड इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज n, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n, राइट. एंड सिंस ये मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है. सो इफ यू वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, okay, so you take determinant of this both the sides, so you will get here determinant of A to the power n minus 1 is the determinant of adjoint of A. Okay, so determinant of adjoint of A is what? Determinant of A to the power n minus 1. Okay, so this is one important property. The next important property is if you take adjoint of adjoint, okay, so double adjoint, and then you take the determinant of that, then it will give you determinant of A to the power n minus 1 whole square. Okay, so this is another important property of your adjoint. Now, since you know what is an adjoint and what are the important properties of an adjoint, let me tell you about the inverse also. Okay, तो inverse कुछ नहीं होता है. inverse आपने देख लिया कि adjoint upon determinant होता है. तो inverse की कुछ important properties हैं. If you multiply a matrix with its inverse, pre-multiplication or post-multiplication, both will give you identity matrix. If you have to find inverse of two matrices multiplied together, then you can change the order and it will be B inverse into A inverse. ठीक है, वैसे अगर तीन मैट्रिक्स होती है ABC और उसका इनवर्स निकालना होता तो आपका पूरा रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर. इट विल बिकम C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स. ओके, नाउ इफ यू try to find the transpose and then take the inverse, or you take the inverse and then find the transpose, it does not matter, both the results will give you the same answer. Similarly with conjugate transpose, if you take the conjugate transpose and then inverse, or first you take the inverse and then take the conjugate transpose, both are going to give you the same result. Okay, also sometimes they ask you a question, two matrix X and Y when multiplied together gives you an identity matrix, then what can you comment about X and Y?
Okay, so if any two matrix X and Y when multiplied together gives you an identity matrix, then you can definitely say X and Y are inverse of each other. X and Y are inverse of each other. That's the sure fact. तो आप X और Y दोनों को एक दूसरे का inverse बोल सकते हो. Okay, so this was about your inverse. Now let me tell you how to find the inverse of a 2 cross 2 matrix without performing all the calculation of finding the minor, then the cofactor, and then taking the transpose. Okay, so there's a simple trick or a short trick which can help you to find the inverse of a 2 cross 2 matrix. Okay, let's see. Inverse of 2 cross 2. Okay. तो अगर आपके पास कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, लेट अस टेक अ जनरल मैट्रिक्स A B C D. Okay, so to find the inverse of this 2 cross 2 matrix, you can directly find this inverse by first of all change the elements, diagonal elements A and D. Interchange karo positions of A and D, so you will get here D and here you will get A. And also don't change the position of B and C, just put a minus sign with the element B and C, and this will give you the inverse when you divide it by the determinant of A. ठीक है, क्या किया, A और D का आपने position interchange किया, so now instead of A, at the place of A you have D, and at the place of D you have A, and for B and C you have inserted a negative sign with B and C. Okay, so now you can just directly write the inverse of a 2 cross 2 matrix without even thinking. Okay, determinant of A will be AD minus BC. So this will give you the inverse of a 2 cross 2 matrix. अगर आप चाहो कि full length से आप inverse निकालो such that कि आप पहले minor निकालो and then cofactor, that is also very easy for a 2 cross 2 matrix. Okay, if you want I can explain you that as well, but I think we have had a little good practice of the same in your 11th and 12th class, so I don't think that's a very important part क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पे होना भी नहीं है. We are going to discuss questions based on your GATE and ESE, जहाँ पे generally 2 cross 2 से ज़्यादा आपको inverse पूछा नहीं जाता, और अगर पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ properties का आपको use करना होता है. So we will see questions and you will come to know how we are going to approach for the same. Okay, so you can just try this out. Suppose you have a matrix. So if you have to find the inverse of this, ठीक है, तो आप या तो डायरेक्टली इससे निकाल लो, या अगर आपको लगता है कि पहले माइनर और कोफैक्टर निकाल के करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो. I'll directly write the inverse. The determinant is 8 plus 8, that's 16. So my A inverse here is, okay, so that's it. So this was all about your inverse. So since we are done with inverse and its property, now we are ready to move forward with the determination of rank. ठीक है, तो rank determination करने के लिए you need to understand some basic elementary operations which are possible in your matrix and how do we perform those. ठीक है, तो आपके कुछ elementary transformations होते हैं which are possible in your matrix, and the matrix is considered that it does not change after those elementary row and column operation. Okay, so these elementary row and column दोनों ही operation आप perform कर सकते हो, but we are going to perform row operations because for determining the rank and solving the system of equation, the column operations are not allowed. ठीक है, तो row operations ही आपको वहाँ पे करने होंगे. तो but the properties are valid for both row and column operation. तो तीन operations होते हैं which are allowed and considered as your elementary row column transformations. First is when you interchange two rows. Interchanging two rows is considered as an elementary. Interchanging two rows or columns
Okay, so like if I change row 1 with row 2, so I'll write it like this, and it does not affect my matrix. Okay, and we are not talking about determinant, we are talking about matrix. Second one is when you multiply each element of a row, or we can say column as well, by a non-zero scalar. That is also allowed. Okay. Good afternoon, Piyush. Good afternoon. Happy New Year to all of you once again. So when you multiply each element of a row or a column by a non-zero number, that is also allowed. So suppose कि कोई मेरी जो row 1 है, I am multiplying my row 1 with some element, some non-zero number, suppose k. Okay, so my row will now become k times row 1. Okay. Similarly, third operation जो आपका होता है, you multiply a row by a non-zero number and add it to another row. Multiply a row, or I can say column, by non-zero and add it another row और कॉलम. ठीक है, तो रो के साथ कर रहे हो तो रोज में करोगे, कॉलम के साथ कर रहे हो तो कॉलम में करोगे. रो और कॉलम को आप कभी भी एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते हो. तो सपोज इन रो 1 I am multiplying some scalar, suppose k, and I am adding it to row 2. So row 2 is changed to row 2 plus k times row 1. तो ये आपको पता होगा. इट इज जस्ट अ रिमाइंडर कि इन तीन के अलावा कोई भी ऑपरेशन जो आप कर रहे हो, इट मे नॉट बी एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो दीज आर द ओनली थ्री विच आर अलाउड. ओके. So now after your elementary row and column transformation, let me tell you about your echelon form. कि echelon form क्या होता है, how you form how you convert a matrix into your echelon form and determine the rank. Okay. तो echelon form की कुछ condition होती है. The first important condition is the leading element or the leading entry of each column should be on the right of the previous leading entry. ठीक है, तो सबसे पहले तो या the first non-zero element of each row is called your leading entry. ठीक है, तो leading entry होती क्या है, जो पहला आपका नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसी भी रो का, वो आपकी लीडिंग एंट्री होगी. एंड सेकेंड इसमें रूल होता है कि अगर आपकी जो लीडिंग एंट्री है, ईच कॉलम, ईच लीडिंग एंट्री इन द कॉलम टू राइट ऑफ लीडिंग एंट्री ऑफ प्रीवियस रो. ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जो लिखने वाली हूँ समझना उसको ध्यान से. टू राइट ऑफ लीडिंग एंट्री इन प्रीवियस रो. ठीक है, इस तरह से समझो. सपोज यू हैव अ 3x3 मैट्रिक्स. तो पहले आपका ये वाला रो है, ये आपकी मैट्रिक्स है. So when you are going to convert this into echelon form, so first of all leading entry in the first row क्या है, A. ठीक है, then the leading entry in the second row, what should be the leading entry in the second row? अभी आपकी leading entry D है, but as per the echelon form आपकी leading entry should be in the next column, the leading entry should be towards the right of the previous row. तो ये जो आपकी first row है उसके राइट में होना चाहिए लीडिंग एंट्री सेकेंड कॉलम की. ओके, सो इट शुड बी हियर और इट कैन बी हियर. ओके, इट कैन बी ई और एफ, बट इट कैन नॉट बी डी. सो इट शुड नॉट बी डी, दैट मीन्स डी शुड बी जीरो, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपका जो होता है उसको आप बोलते हो लीडिंग एंट्री. तो डी शुड बी जीरो. So we will perform some Gaussian elimination so that we convert this matrix into echelon form. Okay, yes, you are right, Piyush.
तो ओके, अब फिर अगला जो आपका लीडिंग एंट्री होगा इन द थर्ड रो, सो इट कैन नॉट बी जी, इट कैन नॉट बी एच, बट इट विल बी ऑन द राइट ऑफ ई, ठीक है। थर्ड कॉलम का लीडिंग एंट्री इट शुड बी ऑन द राइट ऑफ ई, सो इट कैन बी आई, बट इट कैन नॉट बी हियर एट जी एंड एच, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक्लियन फॉर्म करना है। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फॉर्म अ मैट्रिक्स विद अपर ट्राइंगल, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो इन योर एक्लियन फॉर्म। नाउ द थर्ड रूल हियर इज दैट the rows with non-zero element, rows with non-zero element are above the rows with zero element, are above rows with zero element, ठीक है। मतलब आपके जितने भी जीरो एलिमेंट्स हो रहे हैं वो सारे नीचे की तरफ होना चाहिए और नॉन जीरो एलिमेंट्स ऊपर होना चाहिए। तो वही मैंने आपको बोला कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फॉर्म अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, हाउ टू परफॉर्म दिस एक्लियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होता है। गॉसियन एलिमिनेशन आपको परफॉर्म करना है। गॉसियन एलिमिनेशन का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स एज जीरो, ठीक है। तो आप एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम के अंदर यू टेक वन एलिमेंट एज अ पाइवट एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे कि ये आपकी जो मैट्रिक्स है ए बी सी डी वाली जो मैट्रिक्स है, लेट्स कंसिडर दैट मैट्रिक्स अगेन। ओके, सो अब आपको एक्लियन फॉर्म समझ आया है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। So now in this matrix, what we are going to do? We are going to consider one pivot element. Pivot element आपको choose करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर आप किसी भी एक एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट ले सकते हो। इट कैन बी एनी वन, ए डी जी एनीथिंग। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग ए एज माई पाइवट एलिमेंट। आफ्टर टेकिंग ए एज माई पाइवट एलिमेंट, तो पहले मैंने पाइवट एलिमेंट चूज किया। देन with elementary row and column row transformation, ठीक है, कॉलम नहीं करेंगे, we will perform row transformation. Using row transformation, convert your subsequent element of the column as जीरो। मतलब डी और जी को आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू जीरो। कैसे करोगे, ए को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी स्केलर से एंड यू कैन ऐड इट टू दिस सब्सिक्वेंट रोज। तो इस तरह से आप इसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। वी विल सी द एग्जांपल्स नाउ। आफ्टर दे आर कन्वर्टेड, तो सारे एलिमेंट्स कुछ चेंज हो जाएंगे एंड आफ्टर दिस कन्वर्जन व्हेन दिस विल कन्वर्ट इनटू जीरो एंड सपोज यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं, then what you have to do, the next leading entry is towards the right, ठीक है। तो इस तरफ होगी। so you consider this as your pivot element and then convert h into zero, and if you can convert b into zero, that's also good. if you cannot, then it's fine, no problem. then again ये वाला conversion होने के बाद the next leading entry which will be left is I, so that will be your leading entry. ओके, तो अब जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, व्हेन यू विल कन्वर्ट डी जी एंड एच इनटू जीरो, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड आफ्टर योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड, ओके, यू कैन ऑल्सो रिड्यूस्ड दिस एक्लियन फॉर्म फर्दर, ठीक है। आप इसको रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म इज वेरी सिंपल। reduced row echelon form कुछ भी नहीं होता है। in reduced row echelon form, the first leading element of each row is 1, ठीक है। तो आप बेसिकली a को भी 1 कन्वर्ट कर दोगे डिवाइडिंग द होल रो बाय a, e you can convert into 1 by dividing the complete row by e, and similarly i को भी आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं b c f, that also you try to convert into some लोअर फॉर्म, ठीक है। अगर हो सके जीरो में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाओ तो एज लो एज सिंपली एज पॉसिबल, जितना लोअर फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सको, दैट इज व्हाट यू डू इन योर रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म। ओके, सो
these are the element transformation. Now we will see an example how you are going to do this elementary transformation and convert your matrix into echelon form. Let us see. So consider an example. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट जरूरी नहीं है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये किसी भी m क्रॉस n मैट्रिक्स पे आप अप्लाई कर सकते हो. द मेजर एम इज टू कन्वर्ट इट इनटू एक्लियन फॉर्म. रूल्स आपके सेटिस्फाई होना चाहिए. So look at in this matrix, I'm going to choose my pivot element. So I've chosen this as my pivot element. Now performing row transformation, I'm going to substitute row 2 as row 2 minus row 1 and row 3 will also be row 3 minus row 1. So आप देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा, so that this element gets 0. Okay, to convert it into 0. So definitely after this is going to convert into 0. So you will get here 2, 2, 4. So this is what you have got now. ठीक है, अब आप देखो next. If you see, after first transformation, after first elementary operation, you can see कि आपका जो second और third row है, they are getting proportional to each other. So if I multiply my row 2 divide by 2 and I subtract it with row 3, row 3 is changed to row 3 minus row 2 by 2, then my lower row will convert into 0. Okay, so this is what I have got. Now I can see ki is it satisfying echelon form or not. So you have to check. So if you see, the first leading entry in the first column is 1 and all the other elements are 0. Then in the second column, you see the leading entry is towards the right of the previous row. So yes, this is again satisfying the echelon form, and the 0 elements are at the bottom of the non-zero elements. So this is now your reduced echelon form. Okay, you can reduce it further if you want. आप इस row को divide कर सकते हो 2 से, and then आप चाहो तो try कर सकते हो to convert these elements into 0. Okay, so that is also possible. I'm dividing this row by 2 and then I'm subtracting it with row 1. So my row 1 is now converted into this and row 2 is this. Okay, so this is now more reduced reduced form. So basically यहाँ से we are going to predict what are the rank. ठीक है, what is the rank of your matrix. So to predict the rank of your matrix, we are going to use your echelon form. Now let us study what is the rank. ठीक है, rank से आप क्या समझते हो? Rank is important. Rank is the most important part for your system of equation. So rank of a matrix is basically nothing. It is the non-zero minor of your matrix. ठीक है, the highest order of non-zero minor. Highest order of non-zero minor of a matrix. अब अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ है, या yes Piyush, it is also equal to the number of non-zero rows. तो बहुत सारी तरह से आप रैंक को समझ सकते हो. We will understand it by all the possible ways we can. Basically रैंक जो आपकी डिफाइन होती है for any matrix of your order n, सपोज m क्रॉस n मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है. So you have R is the rank. दो कंडीशन है रैंक की. First condition is there is at least one square submatrix, at least one square submatrix of A which is of order R whose determinant is not 0. Whose determinant is not 0. Okay, मतलब कोई एक
ऐसी सब मैट्रिक्स ऑर्डर आर की होनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ऐसा ना हो कि आपकी सारी ही square submatrix of order R are getting determinant as 0. Okay. And also that all the all square submatrix of order R plus 1, ठीक है, of order R plus 1 and above that have determinant 0. मतलब इसके ऊपर की जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट जीरो। तो बेसिकली आप किसी भी मैट्रिक्स में द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करते हो, दैट इज द रैंक। तो वही मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन में, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स इज द रैंक। ठीक है, we will see examples and that will give you a clear idea about the rank. सो बेसिकली नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आपको रैंक देगा। तो जो आपका एक्लियन फॉर्म है, द एक्लियन फॉर्म विच वी आर स्टडिंग, अभी जो हमने देखा एक्लियन फॉर्म, इट इज नथिंग, इट इज अ मेथड टू कन्वर्ट योर मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ रोज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, आप जो एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो उससे क्या होता है कि अगर आपस में दो रोज के बीच में कोई भी डिपेंडेंस नहीं है तो वो आपको एक नंबर ऑफ उतने रोज देगा विच आर नॉन जीरो। ठीक है, सो दिस एक्लियन फॉर्म, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिप्रेजेंट्स योर रैंक। ठीक है, तो आपको एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करके यू कैन सी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो इन द लास्ट एग्जाम्पल विच वी सॉ, ये वाला जो आपका एग्जाम्पल था, तो इसका जो ऑर्डर था दैट वाज 3 क्रॉस 4। ओके, so and you can see the number of non-zero rows here are 2. The rank will become equals to 2. Okay, there are some few properties of rank. Let us look at those as well. So the important properties of rank is, एक तो पहली आपको definition से ही clear है that the square submatrix of order R with non-zero determinant will be your rank, and the minor above R plus 1 order have determinant 0। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके ऊपर के सारे डिटर्मिनेंट्स 0 होना चाहिए उस मैट्रिक्स के, और ऑर्डर R का डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। देन इफ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, suppose you are trying to find the rank of transpose, then it will come equals to the rank of the matrix itself। ठीक है, and if suppose you have a matrix A which is of order m cross n, so rank of the matrix A will be less than or equal to minimum of m cross n। ठीक है, मतलब अगर आपकी जैसे हमने जो भी मैट्रिक्स ली थी उसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 4, तो डेफिनेटली जो रैंक ऑफ ए होगी इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 and 4, दैट इज 3। तो it can be less than or equal to 3 but it cannot be 4 in any case। ठीक है, तो जो सबसे छोटा आपका ऑर्डर में नंबर है मींस अमंग्स द रो एंड कॉलम, उससे भी कम आपकी रैंक आएगी। then if you have to find the rank of two matrix multiplied together, rank of AB, then it will be less than or equal to rank of A or rank of B। ठीक है, दोनों की ही रैंक से जो या तो कम होगी या बराबर हो सकती है। So combinedly we can say that the rank of your matrix multiplied together AB will definitely be less than or equal to the minimum of rank of A and rank of B। ठीक है, मतलब सपोज आपकी जो मैट्रिक्स A है उसका रैंक दे रखा है आपको 3 and rank of matrix B is given as 4। So if you have to find the rank of matrix AB, then definitely you can say that this rank will be less than or equal to minimum of 3 and 4, that is 3। ठीक है, it will be less than or equal to 3, इससे ज्यादा नहीं आ सकती in any case।
Okay, so these are some things which you have to remember. And yes, definitely the number of non-zero rows in its echelon form will give you the rank of the matrix. Okay, so now let's move forward and let us practice a few questions जिससे आपको समझ पड़ेगा कि रैंक कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं. So let's have an example here. Suppose you have to find the rank of this matrix. Find the rank of this matrix. It is a 3 cross 4 matrix and you have to find the rank of this matrix. ठीक है? So there can be multiple ways how you can find the rank. Let us see. Tell me the rank of this matrix. तो दो तरीके हैं, या तो आप देख लो कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट. इफ द डिटर्मिनेंट इज कमिंग आउट 0, 3 क्रॉस 3 एक आप इसकी मैट्रिक्स पूरी 3 क्रॉस 3 जितने भी आप इसमें मैट्रिक्स सेलेक्ट करोगे अगर उन सबका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है then the rank is definitely not 3. Okay, and it is less than 3. And why I am considering 3, why I am not considering 4? Because you know the rank of a matrix will be less than or equal to minimum of 3 and 4. ठीक है, तो minimum of 3 and 4 is 3, so it will be either less than or equal to 3. Let us see how we are going to find it. So if you can directly see कि there is some relationship between the two rows or two columns, then definitely you can say that the rank will be 0. The rank will be, the determinant will be 0. Or if you cannot directly say, तो आप इसको echelon form में convert कर लो. दो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करने वाले हैं. So perform some row transformation and you will see when performing some row transformation. So I have minus this row 2 with row 1, and 2 times of row 1 I have subtracted with row 3. So I have changed this elements into 0. So this is what I have got now. Now again I cannot directly say, so I will again try to make a few more transformation and convert it further into echelon form. So I am subtracting row 1 and row 3, row 3 and row 2. So what I get here is, so this is what I have got. Okay, now अगर अब इसके आगे if I do any other transformation, there is no chance that there will be any further reduction. So I can see that there are 3 non-zero rows, and since there are 3 non-zero rows, I can say that the rank of this matrix is 3. Okay, so 3 is the rank of this matrix. Okay, is that clear? Now next, another example. This is an example from GATE. ठीक है, उसमें they have directly asked you about the rank of your matrix. So you have to tell me the maximum possible rank of this matrix. Maximum possible rank कितनी होगी? Since it is again a 3 cross 4 order matrix, तो maximum possible rank हो सकती है इसकी 3. But you have to check whether it is 3 or not. It can be less than 3 also.
So you will check, and if you see it carefully, you can see that the column 1 and column 2 are proportional to each other. Then definitely जो इसका 3 cross 3 आप कोई भी determinant लोगे, suppose if you are considering this matrix, तो इसका जो 3 cross 3 determinant होगा वो 0 होगा, क्योंकि rows columns इसके proportional हैं. So definitely the rank is not 3 now. So now you consider a 2 cross 2 minor. ठीक है, 2 cross 2 कोई एक मैट्रिक्स ले लो जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट 0. सपोज आई कंसिडर, सबसे पहले आई हैव कंसिडर दिस. सो इफ आई सी दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है, एंड इफ आई सी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इट इज कमिंग आउट एज 0. बट आफ्टर दिस आई कैन नॉट से कि ये 0 ही होगा. I have to check other determinant as well. अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है 2 cross 2, then definitely the rank is not 2. It is sorry, the rank will be 2. कोई एक भी नॉन जीरो आता है तो. So this again you see this matrix 3 1 4 0. So here you will see कि इसका जो determinant है it is not 0, right? It is -4. Since it is not 0, so the rank of this matrix is 2. Okay, are you getting? एक भी नॉन जीरो अगर डिटर्मिनेंट है, then you can say that the rank is that order of the matrix. Yeah, yes, you are right, Aman and Piyush. Okay, so I think rank का concept अब clear हो गया होगा. And since अब rank, you know how you are finding the rank, let us move forward with the system of linear equation, क्योंकि rank का सबसे ज़्यादा यूज वहीं पर है. Okay, so let's move with your system of linear equation. देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कुछ भी नहीं होता है. अभी तक जब भी हमको कोई अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा दे दिए जाए, मोर देन 2 वेरिएबल्स और सो 2 वेरिएबल होते हैं, तो हम उसको लाइन की इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई के पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एंड वी से वेदर द सॉल्यूशन इज देयर और नॉट. So just try to relate that part here as well. So we will relate both the things. So if you have suppose n number of variables, and you have suppose m number of equations, n variables. Suppose it is equal to b1, b2 and so on till bn. So what I said that if you have n number of variables and you have m number of equations, okay, then in that case, इससे पहले भी आपने ऐसे questions किए होंगे in your 12th standard. You used to write a matrix, okay, A matrix, which was called as your coefficient matrix, है ना. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स उसको हम बोलते थे. तो उसमें जितने भी आपके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है, दे वर अरेंज्ड इन अ मैट्रिक्स फॉर्म a11 a12 a13 till a1n, and here in a column the rows were m. Okay, so this was your coefficient matrix. Then you used to write a variable matrix which you have to find, variable matrix which was your x. It contains x1, x2, x3 till xn, क्योंकि n number of variables है. And you used to write a vector, column vector, which was b1, b2 and so on. So this was your column vector. ठीक है. अब फिर आप यहाँ पे क्या करते थे, यू यूज टू राइट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. अब आपको x की वैल्यूज चाहिए, सो यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एज a इनवर्स b. तो आपको उसके लिए इनवर्स निकालना पड़ता था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एंड यू यूज टू फाइंड. But this was possible only when the inverse of A exists. That means the system of equation has some solution definitely, है ना. बट अगर ऐसा इस केस आ जाए और आपसे पूछा जाए कि whether this system has solution or not, whether it has unique solution or infinite solution, and if such a case occurs, then in that case this system will not work. In that case you have to find out whether the system is consistent or inconsistent based on the rank of the system. ठीक है, तो रैंक आपको देखनी पड़ती है इस केस में. वी विल सी हाउ वी आर डिटरमाइनिंग द रैंक, बट जस्ट ट्राई टू रिलेट दिस पार्ट विद योर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स. ठीक है,
तो सपोज आपके पास इक्वेशन विद टू वेरिएबल है and you used to find the solution of that equation. तो सपोज आपके पास एक इक्वेशन थी ax1 or I can say ax plus by a1x plus b1y is equals to some c1 was given and some another line equation was a2x plus b2y is equals to c2 is given. ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी दो लाइन की इक्वेशन थी. तो when you used to solve this, there were three cases which used to arise. The first case was if the two lines intersect each other. Okay, so the line L1 and the line L2 intersect each other, मतलब किसी एक पॉइंट पे मीट करती है. Then these were your intersecting lines. Intersecting lines. That means it has some solution possible. Okay, then there was a solution when there was a case that these two lines can never meet each other. ठीक है, कभी भी नहीं मिल सकती है. That means the two lines L1 and L2 are parallel to each other. And there was also a case that the two lines L1, suppose one line is L1 and the other line is L2. So these two lines overlap each other. मतलब एक दूसरे के ऊपर coincide करती है. So you also call them as coincident lines या overlapping lines. ठीक है, ये तीन cases होते थे 1, 2 and 3. So these three cases basically, in the first two cases here you can see intersecting and coincident line. Basically there are points on which you will find the value of x and y where both the lines satisfy this equation. मतलब x और y की कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू तो है such that both the lines satisfy that. So this type of system was known as consistent system. Consistent system मतलब there is definitely a solution exist. Okay, some solution for your equations exist. Here in consistent system में जब intersecting lines है मतलब सिर्फ एक ही ऐसा point है जहाँ पे ये equation satisfy होगी, then it is called as your unique solution. And if it is coincident line, then it is known as your infinite solution. ठीक है. And in case of parallel lines, since these lines can never intersect or they can never meet each other, then this system is known as your inconsistent system. That means here no solution exists. ठीक है, इसका कोई solution नहीं है. इस लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 will be there, and if this is there, that means that system is having inconsistency or the lines are parallel. Okay, so they will never intersect each other. There will be no solution for such a system of equation, right? So similarly idhar bhi in our case also, when we are talking about system of linear equations, so there is the case when you find the rank of your matrices. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास ranks निकालनी पड़ती है. Here when you write the rank, so we are going to write the rank. So in your system of equation आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे augmented matrix. So augmented matrix AB you will write. It is nothing. You write a matrix A separated with a line by the matrix B. ठीक है, तो आप augmented matrix AB लिखते हो and then you find the rank by converting it into echelon form. So here after converting into echelon form, there are two things which you get. You get a rank of A and you get rank of augmented matrix AB. ठीक है, so based on this rank you try to find out what your system of equations represent. तो इसमें भी आपके पास certain cases हैं. Let us see those cases. Suppose आपकी equation जो है it is a homogeneous equation. Homogeneous का मतलब जो B है आपका वो 0 है. So in a homogeneous equation there will be definitely consistent solution. मतलब there will be a solution for sure. Consistent system always.
सो अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है तो उसमें भी दो केसेस अराइज होते हैं, वेदर योर सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन और वेदर इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन. तो फॉर कंसिडरिंग वेदर इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, if the rank of A is equals to rank of augmented matrix AB, ये आपकी सिचुएशन होती है. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सिस्टम condition for your consistency of system. If the rank is equal and it is equal to the number of variables, in that case you will have a unique solution. If the rank are equal but they are less than the number of variables, in that case you will have infinite solution. ठीक है, मतलब दोनों रैंक बराबर है पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है. सपोज इफ यू हैव 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स x, y and z पर आपकी रैंक 2 आ रही है, तो इन दैट केस देयर इज सोल्यूशन डेफिनेटली, बट इट इज हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन. ओके, दैट मीन्स जो एक्स वाई जेड से जो भी आपका प्लेन बन रहा होगा वो कैसा प्लेन होगा, कोइंसिडेंट प्लेन्स होंगे. ओके, सो दोस there will be coincident planes, that's why you will have infinite solution. The homogeneous equation you must remember is always consistent and always have solution. It can be unique or infinite based on the rank. Similarly, for non-homogeneous system of linear equation system, in that case also आपके पास दो चीजें हैं. The system can be consistent and it can be inconsistent. Okay, so it can be consistent or inconsistent. तो जैसे कि आपको मैंने बोला, if you want your system to be consistent, then your rank of A and augmented matrix should be equal, and the rank if are unequal, that means your system is inconsistent. That means there is no solution. ठीक है, ऐसी कोई भी x y की values नहीं होंगी for which the equation satisfy both the equations. Consistent, inconsistent, this is the required condition, and in that also दो cases है आपके पास, एक है unique solution and दूसरा है infinite solution. For unique solution, as I told you, rank is equal and is equal to the number of variables. For infinite solution, the ranks are equal but they are less than the नंबर ऑफ वेरिएबल. ठीक है, तो ये जो बेसिक आपका कंसेप्ट है कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कब होता है बेस्ड ऑन द रैंक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द रैंक ऑफ योर सिस्टम ऑफ इक्वेशन. Okay, we will see some examples based on this and you will come to know. Okay, so let's take an example. Consider the system of equation 3x minus y minus 5z x minus 2y plus 3z is equals to 7 minus 1 minus 2x plus 4y minus 6z is equals to. Okay, so this is the system of equation you have. Now you have to find the solution for the system of equation. You have to tell whether the solution of the system of equation exists or it does not exist, and if it exists then whether it is a unique solution or an infinite solution. Okay, so you have to tell me this solving this system of equation. How we are going to do? जब भी आपको किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डायरेक्टली कुछ भी बिना सोचे समझे आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखना है. So you will write the augmented matrix AB. So how we write? A is the coefficient matrix. तो आप coefficient matrix लिखो.
augmented के लिए just you write the B column vector on this right side. So this is your augmented matrix AB. Now perform some row transformation and column transformation to find out whether this matrix is having rank equal to rank of A and rank of augmented matrix AB are equal or not. तो हम कैसे इनको transformation करके convert करेंगे? Let us see. So suppose I am doing some transformation. I am putting my row 2 as row 2 minus row 1 and row 3 as row 3 plus 2 times row 1. So what I get here, the matrix which is converted will be like this, subtracting. So you can see that this last of your matrix, so this is 2 times, right? Yeah, 1 minus minus 2, that's become 3. So this is what you're getting here. Now you check, if you see here, आपका जो rank of A कैसे देखोगे आप? Rank of A means this matrix here, only this matrix. So this will give you rank of A. So rank of A here you can see 2 non-zero rows are there. So rank of A is 2. But rank of augmented matrix AB, this complete matrix, okay? तो इस complete matrix में देखो कितने non-zero rows हैं. तो rank of augmented matrix AB is 3 because there are 3 non-zero rows in this matrix. So you can say that since the rank of A is not equal to rank of augmented matrix AB, and that's why this equation is having inconsistency or there is no solution. ठीक है, क्योंकि दोनों का what are you telling Deepak, 2 or 1? So we are adding it, right? Okay, this is minus 1 here. No, it does not matter इधर minus 1 है, ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉन जीरो रोज देखनी है. So you will see that it is not zero and that's why the system here is inconsistent. Okay, it will have no solution. Fine. Okay. तो ये जो आपका बेसिक आइडिया है, दिस इज हाउ इट इज यूज्ड हियर. वी विल सी दैट गेट में आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. Sometimes they ask whether the system is having inconsistent solution, consistent and so on. Okay, try one more example and then we will move on with your gate question. So this is one example. X plus z is equals to 6, z minus 3y is equals to 7, 2x. Okay, try to solve this. Tell me whether the system is consistent or inconsistent. If it is consistent, does it has a unique solution? If it has a unique solution, tell me the unique solution also. What are the values of x, y and z? And if it does not have a unique solution, whether it has infinite solution. Okay, so you just have to solve the system of equation and tell me the value of x, y and z if it exists. Yes, definitely Ashutosh, it is कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस. ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये बहुत कॉमन पार्ट ही चल रहा है. लीनियर अलजेब्रा सभी के गेट और ईएस में पूछा जाता है, सारे ही ब्रांचेस में. तो यू कैन वॉच इट एज वेल. ओके, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको रैंक डिटरमाइन करना है तो आप सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखो. विदाउट थिंकिंग जस्ट राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड देन यू विल कम टू नो. तो आई एम राइटिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो कोएफिशिएंट होता है ए, ठीक है. सो यू हैव 0. So this is my augmented matrix. Okay, now I have to find the rank of A and rank of AB and then I will find my solution. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लो. रो 3 is changed to
row 3 minus 2 times row 1. So now the matrix which I get here is okay. So this is what I have got till now. I can again try to reduce it further. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि since I am trying to convert it into echelon form, first of all observe whether there is any other transformation which can convert this rows into zero. ठीक है, कोई भी row अगर आपकी zero convert हो पा रही completely, you will see that even if you have some more transformation, this is not going to convert a complete row into zero. So you can say that here the rank of A, from here you will see the rank of A is 3 and the rank of augmented matrix from this complete matrix, rank of augmented matrix AB is also 3. ठीक है, तो अब आप देखो जब दोनों की रैंक बराबर है इसका मतलब सिस्टम कैसा है? The system is consistent. Definitely it will have some solution and it is also equal to the number of variables. Number of variables कितने हैं आपके? 3 है, x, y and z. And since ये तीनों बराबर हैं, the ranks are equal to the number of variable, you can say there will be a unique solution. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ मैं कि how you determine that unique solution using this matrix itself. Okay, if you want you can have some more transformation here or otherwise आप यहाँ से भी इसको solve कर सकते हो. Okay, what this column is for x, this is for y and this is for z, है ना, x, y और z का column है. Okay, so the first row से आपको पता लग रहा है x plus z is equals to 6. From the second row you are getting that minus 3y plus z is equals to 7, and from the third row you are getting y plus z is equals to 3. Okay, so you can just solve these two equation with two variables. Solve करना आसान होता है. When you will subtract both of these you will get minus 4y is equals to 4 and that's why you will have y is equals to minus 1. y minus 1 आ गया, put minus 1 here, you will get z is equals to 4 and when you got z, put it in equation 1, z is 4, then you get x is equals to 2. So the solution of your system of equation is 2, 4, minus 1, 2 minus 1 and 4. Okay, is that clear how you are doing? अब आप चाहो तो इसको और reduce कर सकते हो in echelon form. How I can reduce it further? If I subtract my row 2 with row 3, row 2 is row 2 plus 3 times row 3. ठीक है, so जो अब मेरा echelon form convert हो जाता 1 0 1 3, this will be 4, 9 plus 7 is 16 and here I am getting 0 1 1 3. ठीक है, ये आपका. और अब आप चाहो तो ये जो रो 2 है उसको रो 3 के साथ स्वैप कर सकते हो, मतलब इंटरचेंज कर सकते हो, और डायरेक्टली फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन सी दैट दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y, दिस इज फॉर z, है ना. तो आपको जो सेकंड रो है उससे पता लग रहा है 4z इज इक्वल्स टू 16, सो z इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है. ठीक है, फिर आपकी जो थर्ड रो है उससे पता लग रहा है y प्लस z इज इक्वल्स टू 3, तो z की वैल्यू पता है तो y पता लग गया. एंड सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट x plus z is equals to 6, so you can get the value of x. Okay, is that clear how we are trying to find out? Let's move forward another example. ठीक है, ऐसे ही आप इक्वेशन, अब अगर रैंक अनइक्वल आ जाती तो आप बोल देते कि द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और अगर इक्वल आने के बाद भी इफ इट वाज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब 3 रैंक की जगह अगर 2 रैंक आ जाती तो आप क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, सपोज लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. These are the system of equations given and you have to find the solution for this.
Okay, so you have to find the solution for this system of equation. Tell me. As I told you, without thinking, write your augmented matrix AB. You'll have your augmented matrix like this. ये आपकी augmented matrix बन गई. अब आपको चेक करना है कि whether the system has consistency or inconsistency. So you will just perform some transformation. I'm directly performing. So I'm doing row 3 as row 3 minus 2 times row 1. So I'll get here 2 times row 1. I'm subtracting. This is what I have got. Now I can just write this row, last row I can divide it by 3 and I'll get this simplified form. Last की जो third row है उसको 3 से divide करने के बाद I'm just trying to simplify ताकि I can determine whether there is another transformation possible or not. Okay, so this is what I have got. Okay, now since you can see, अगर आप कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करते हो तो देर यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी ऑफ द रो इनटू जीरो. ठीक है, रो 2 या रो 3 किसी को भी आप जीरो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो. दैट मीन्स द रैंक ऑफ योर मैट्रिक्स ए, दिस इज द रैंक ऑफ ए एंड दिस इज द रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बोथ आर इक्वल क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं, दे आर इक्वल टू टी. Since they are both equal and equal to the number of variables. ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 के ही बराबर आ रही है आपकी रैंक. मतलब कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट तो है और वो भी यूनिक सोल्यूशन के साथ. तो यूनिक सोल्यूशन अगर आपको निकालना है तो जैसे कि मैंने बोला, आप डायरेक्टली इन इक्वेशंस के थ्रू निकाल लो या फिर इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है, तो फॉर सिंप्लीफाइंग दिस मैट्रिक्स फर्दर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम writing row 1 as row 1 minus row 3 and row 2 as row 2 minus 2 times row 3. So I am converting it into a very simpler form. So I get here 1 0, I'm subtracting it, so it will become 2 and it is 1. 2 times subtract कर रहे हो आप, so 5 minus minus 2 will be 7 and it will be minus 4 minus 10 minus 14. Okay, this is what you have now got after simplifying. तो अब आप देखो वापस से आपकी जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो में जो थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, दैट इज 7. मतलब वो z को डिनोट करता है. दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y एंड दिस इज फॉर z, राइट. सो यू कैन राइट 7z is equals to minus 14. So you got z is minus 2. Similarly, from third row you are getting y minus z is equals to 5 and you know z is minus 2. Okay, so you will get y is equals to 3 and from the first row you get x plus 2z is equals to 1. So z is minus 2, so this will become 5. So x आपका 5 आ गया, y 3 and z minus 2. Okay, so this is how you solve the system of equation, and if it has a unique solution, you can find that unique solution directly without finding the inverse. ठीक है, बस आप एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. So this is one example. Now let us see some example how these questions have been asked in your GATE examination. ठीक है, GATE में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, that I'll tell you. Basically in GATE they do not ask you directly. ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं whether the system has unique solution, infinite solution and so on. But sometimes they also give you a question like this. They'll say the system of equations given below, they are x plus y plus z is equals to 6, x plus 4y plus 6z is equals to 20 and x plus 4y plus lambda z is equals to mu. ठीक है, ये आपको इक्वेशंस दे दी and it says this system has no solution for values of lambda and mu given by. तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है एंड दे आल्सो हैव सम ऑप्शन फॉर लैम्डा एंड म्यू.
So they say whether lambda is equals to 6, mu is equals to 20, lambda is not 6, mu is not 20, lambda is 6 but mu is not 20 and so on. ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि फॉर नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू. ओके, तो अब आप इसको कैसे करोगे? ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो मतलब बेसिकली आपको इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के रैंक से ही मतलब होगा, क्योंकि आपको नो सोल्यूशन वाला सिस्टम बताना है. सो लेट अस सी हाउ. So you write the augmented matrix AB here. So when you write the augmented matrix, what is the matrix? 1 1 1 6 1 4 6 20, and this is 1 4 lambda and mu, right? So this is the matrix you have written. Now you look, you have to find the rank, and since it is telling no solution, for no solution, you know the rank of A should not be equal to rank of AB. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी. परफॉर्म सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो आई एम सबट्रैक्टिंग रो 2 एंड रो 3 विद रो 1, सो just trying to convert it into echelon form. So this is what you are getting here. This will be lambda minus 1 and this will be mu minus 6. Okay, so this is what you have got. Now again I am going to simplify it further ताकि no solution वाला concept मैं यहाँ पे apply कर सकूँ. ठीक है, तो इस केस में, ऐसे केसेस में देयर कैन नॉट बी एनी शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट. ठीक है, आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के उसका डिटरमाइन करना ही पड़ेगा रैंक. सो यू आर सबट्रैक्टिंग रो 2 with रो 3. So here you are getting lambda minus 6 and here you are getting mu minus 20. This is what you have got. Now since it is telling that it should have no solution, that means rank of A should not be equal to rank of AB. तो देखो, जो मैट्रिक्स आपकी A है, ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी, दिस स्मॉलर मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स A, राइट? और बड़ी वाली आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A भी है. अब अगर आप लैम्डा माइनस 6 को 0 पुट कर देते हो तो लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो दिस एलिमेंट विल बिकम 0. Okay, so if this element becomes 0, then the rank of your matrix A will become 2. ठीक है, अब अगर इसकी रैंक 2 हो गई है, then you are left with mu minus 20. अब mu minus 20 भी अगर 0 हो गया, और अगर mu minus 20 0 हो जाता है, मतलब म्यू की वैल्यू अगर 2 हो जाती है, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. और इस केस में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी दोनों बराबर हो जाएगी. तो आपका जो सिस्टम है वो नो सोल्यूशन नहीं रहेगा, इट विल बिकम इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला सिस्टम. सो दिस सिचुएशन शुड नॉट अकर, मतलब mu minus 20 should not be equal to 0. So when mu minus 20 will not be equals to 0, in that case your rank of augmented matrix AB will be 3. So yeah, now you see rank of A is 2, rank of augmented matrix AB is 3. दोनों की ranks अलग अलग हैं, then you can say the system is having no solution. ठीक है, अब ये तो ठीक है, इससे तो एक केस निकल के आया. अब दूसरा केस किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि लैम्डा माइनस 6 को नॉट 0 कर देते हैं, है ना? तो अगर लैम्डा माइनस 6 नॉट 0 रखोगे तो उस केस में जो रैंक ऑफ ए आ जाएगा, इस केस में रैंक ऑफ ए आ जाएगा 3. एंड अगर आप इधर म्यू माइनस 20 को 0 रख भी देते हो, if you even keep mu minus 20 as 0, then also the rank of augmented matrix AB will be 3, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया ना. तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रैंक ऑफ A is not getting less than 3, then rank of augmented matrix AB will definitely be not less than 3. ठीक है, वो अपने आप 3 से बड़ा आ जाएगा. So this you have to take care. That means this element should be 0. Happy New Year, Amit. Happy New Year. Okay, so is that clear? Why you are keeping lambda minus 6 as 0, so why you are considering this and this but not this situation? Okay, this should be clear. So here you got your answer as lambda is 6 but mu is not 20, so your answer is C. Okay,
So this was one question. Okay. Happy New Year, Rohit. Happy New Year. So this new year, make a resolution to practice harder, to learn more, and practice efficiently towards achieving your goals. Okay. All the best for all of you. चलो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं. So you will come to know more about the system of equation. So there is another question from GATE itself. Okay. आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है. द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन एज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y plus 3z is equals to 4 and x plus 4y plus kz is equals to 6. ठीक है. And this system will not have a unique solution for k equals to. You have to find the value of k such that the system do not have a unique solution. Last 1 month strategy. Yes, definitely, Amit. Basically देखो, last 1 month is the most crucial time for any exam. ठीक है. Because this is the time, if is this at this time अगर आपने साल भर बहुत मेहनत की है, बट अगर आप इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हो तो यू आर गोइंग टू सफर. दिस टाइम इज द टाइम जब सबसे ज्यादा आपको लगेगा दैट यू आर हैव अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन और थक गए हो और नहीं अब तो बहुत पढ़ लिया, वैसा वाला फीलिंग आने लगता है. एंड यू ऑल्सो गेट नर्वस. ठीक है. तो जस्ट you what you have to do is you have to keep those thinkings and thoughts aside and you have to focus completely and fully on your preparation of the exam. ठीक है. तो लास्ट 1 month में the best thing you should do is फोकस ऑन द रिविजन. ठीक है. कोई भी नई चीज आप पढ़ने की कोशिश मत करो. अगर आप कोई चीज पढ़ चुके हो तो आप उसको रिवाइज करो. ठीक है. ट्राई रिवाइजिंग एज मच एज यू कैन. ट्राई रिवाइजिंग जितना भी पढ़ा है उसको मैक्सिमम रिवाइज करने की कोशिश करना चाहिए. एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज गिव एटलीस्ट 3 to 5 मॉक टेस्ट कम से कम. ठीक है. अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो ये अच्छी बात है. फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो. पूरा कंप्लीट 3 घंटे बैठ के गेट का पेपर दो. उससे क्या होगा, यू विल हैव दैट टेंडेंसी टू सिट इन एग्जाम बिकॉज जनरली वी डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू सिट फॉर कंप्लीट 3 hours एंड प्रैक्टिस. ओके. तो ये बहुत दिक्कत होती है इस चीज में बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट कंसिस्टेंसी विद अस. सो टू गेट दैट कंसिस्टेंसी यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ एंड योर माइंड. तो सिट डाउन फॉर 3 hours completely. बिल्कुल उसी तरह से एग्जाम का माहौल बना के अकेले कमरे में अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गिव दैट 3 hour मॉक टेस्ट. ठीक है. मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और 3 to 5 आई एम टेलिंग मिनिमम. ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करना चाहिए, वो भी फुल लेंथ. ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देने लग जाओ. ठीक है. सब्जेक्ट वाइज कर लो आप प्रैक्टिस, बट रोज एक कोशिश करो कि मॉक टेस्ट आप दो एट द टाइम वेयर एट दैट टाइम विच यू हैव योर एग्जाम. ठीक है. तो अगर आपका एग्जाम सपोज 2 शिफ्ट में है, सुबह वाली शिफ्ट में है 9 से 12 वाली में, तो 9 से 12 बैठ के दो. अगर 2 से 5 वाले में है तो 2 से 5 में बैठ के दो. ठीक है. इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग और आपकी जो बॉडी है, इट विल गेट यूज टू विद इन अ मंथ ऑफ सिटिंग इन दोस 3 hours एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द टॉपिक विच यू आर डूइंग. ठीक है. तो आपका दिमाग एकदम उसी हिसाब से काम करेगा. वरना क्या होता है, वी डू नॉट हैव दैट हैबिट और वहाँ एग्जाम सेंटर में जाके नींद आती है. तो वो नहीं होना चाहिए. सो प्रैक्टिस गिविंग योर मॉक टेस्ट एट द टाइम व्हेन यू आर अलॉटेड फॉर योर गेट एग्जामिनेशन एंड try to focus more on the revision and the part which you have already covered. ठीक है. और जो easy part है ना, तो उसको easy समझ के, ऐसा नहीं कि हम रिवाइज ना करें. रिवाइज करो, रिवाइज मोर and do not skip anything. ठीक है. If you are not able to remember formulas, if you are skipping, you are forgetting those formulas. कई बार होता है important formulas दिमाग में, पता नहीं end time पे क्या होता है कि नहीं रह पाते हैं. So just write down those
अगेन एंड अगेन ऑन अ पीस ऑफ पेपर सो दैट यू डू नॉट मिस। ठीक है, कई बार प्लस माइनस की गलती से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो कुछ नहीं, ऐसे एक शीट ऑफ पेपर लो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिवाइज तो कर ही रहे हो तो साथ में बैठ के लिख लो। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके फॉर्मूलाज एक पेपर पे बैठ के आप लिखो, एंड दिस विल हेल्प यू वेरी मच इन योर एग्जाम। तो जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे होगे तब आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल नॉट ऑटोमेटिकली कम इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ऐसा होता है बिकॉज दैट इज व्हाट वी से, ट्रेनिंग योर माइंड एंड योर सेल्फ फॉर व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करो, लिखो बार बार। So in mathematics also, I always ask my student that do not try to solve your questions orally, or you know that कई बार होता है we are like कि mentally बहुत अच्छे से कर लेंगे, but it's not the thing. Okay, कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, जल्दी से लिख लो साइड में, जब फटाफट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी और देखा कि डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं आ रहा है, इफ डिटर्मिनेंट इज कमिंग आउट एज जीरो देन आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस मैट्रिक्स इज having determinant 0, the rank is less than 3। तो इसलिए लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार लिख के अगर आप कोई गलती भी कर रहे हो ना, तो जब आप चेक करोगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल गेट की तरह प्रैक्टिस करो। गेट आपका आ ही गया है एकदम पास में, प्रैक्टिस एज यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, तो वो जो एंजाइटी आपके मन में होगी वो नहीं रहेगी। ठीक है, सो यू शुड नॉट हैव दैट एंजाइटी एट द टाइम ऑफ एग्जाम। दैट्स व्हाई practice your mock test at that time when you are allotted for your gate। बिल्कुल वैसे ही तैयार होके बैठ जाओ 3 घंटा और मॉक टेस्ट दो। ठीक है, that's what I can tell to you। other than that, last day before your gate exam, do not have that level कि अभी तो पूरा रिवाइज कर देंगे, सुबह से लेके शाम तक पढ़ ही रहे हैं, अगले दिन सुबह 9 बजे पेपर है। तो डोंट डू दैट। ठीक है, वन डे बिफोर, एटलीस्ट 12 आवर बिफोर योर एग्जाम, एटलीस्ट stop preparing, stop studying, even discussing about what you are doing। ठीक है, मतलब about your exam, about the formulas, stop it, just relax। जाके थोड़ा सा घूम लो। घूम लो इसका मतलब ये नहीं कि पता नहीं निकल गए कहीं पे। जस्ट हैव अ वॉक, वॉच अ लाइट शो। ऐसा नहीं कि कोई बिंज वॉच करने लगे नेटफ्लिक्स में, फिर कल अगले दिन एग्जाम में वही चल रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, तो कुछ ऐसा नॉर्मल सा जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो। आराम से सो, बढ़िया 8 घंटे सो के जाओ, है ना। अगले दिन बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और बिल्कुल आराम से पेपर देना। बिकॉज many times it happens with many students, it happens that the level of preparation is too good, but still at the end they just miss their target with a few points just because उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, या फिर वो घबरा जाते हैं पेपर करते टाइम। डोंट डू दैट। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू अबाउट प्रिपरेशन फॉर द लास्ट मंथ। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग जितना कर सकते हो। अभी बचे हुए 28-29 days, एंड देन नॉट 28-29, you have a month। okay, and then you can relax on the last day completely। okay, if anything else you want, just let me know. I'll try to provide it, provide the best from my side। So let's move on with the question. Augmented matrix I'm writing quickly। So this is the matrix written। Now just try to perform those again transformations. So I think you can directly perform the transformations. I don't need to write them again and again. Again, another transformation again। ठीक है, तो ये अब आपकी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुकी है k-7 and this is 0। So you want that this should not have a unique solution, है ना। यूनिक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए तो दो ही चीजें हैं, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन होने के लिए तो फॉर नो सोल्यूशन यू नो दैट यू हैव रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी।
बट हियर इफ यू सी दैट अगर आप रैंक ऑफ ए को 2 करना चाहोगे इंस्टेड ऑफ 3, then definitely rank of AB will also become 2. Okay, so this case will not be possible here, क्योंकि आप अगर k minus 7 को 0 करोगे तो रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A भी दोनों बराबर हो जाएगा. So the only case possible is you have infinite solutions. तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर होते हैं, बट दे आर लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. So for putting this as equal to 0, you will have k as 7, then you will have the rank of A and rank of AB as 2. Yeah, so you will get the value of k as 7 for not having a unique solution. That means you have infinite solution, and if you do not put k as 7, then you will have a unique solution. ठीक है? Yes, Divyesh, that's right. You are right here. तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं वो गेट में. These are the questions which they ask. Okay, then there was one statement type question which can be confusing. उसमें दिया था आपकी एक मैट्रिक्स Q है which is of order 4 cross 5. Okay, and the rank of matrix Q was given as 3. Okay, something like that it was there. So they were asking that what can you comment on the rows and columns of Q, whether the rows the matrix Q have 3 independent rows and 4 independent columns, or whether it has 4 independent rows and 5 independent columns. Independent का मतलब समझ रहे हो, आपस में कोई भी डिपेंडेंस नहीं है. तो सीधी सी बात है, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक सपोज 3 आया, दैट मीन्स दैट मैट्रिक्स हैव 3 इंडिपेंडेंट रोज एंड 3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स. क्योंकि अगर डिपेंडेंट हो जाते 3 में से कोई भी 2, तो वापस से उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, और जब अगर डिटर्मिनेंट 0 आता तो आपकी रैंक 3 नहीं होती, बिकॉज रैंक इज द हाईएस्ट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट और हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर. ठीक है, तो द रैंक बेसिकली डिनोट्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम. ओके, इज दैट क्लियर? So this is all about your system of equation. इसके ऊपर बहुत सारे question है which I'll cover in the practice session. There are a lot of questions. Okay, and in eigen values and eigen vectors, ये दो पार्ट इस मैट्रिक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So this page which is here written, this is important that you have to look into कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा. नॉन होमोजीनियस है तब कब आपका यूनिक या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा, उसमें भी यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे. Okay, so that's all for today's lecture. Try to practice as much as possible. Try to focus on your preparation and avoid all the negativities. So just keep practicing. There are some special class also for you. So आप live class section में Unacademy app पे live classes में जाके you can search my profile AROHI Arohi, and you can follow me there for the upcoming notifications. And you can also follow this Telegram channel, which is your lead gate channel on Telegram, for the notifications of the upcoming lecture. This is my code to get the access to the special lectures, and also it can give you a 10% discount on your Unacademy subscription. तो आप वहाँ पे जाके lectures watch कर सकते हो. Preparation और strategy for last 1 month, I'm definitely going to have a class for you all so that you can be motivated enough, क्योंकि ये जो टाइम है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, just focus on your preparation and practice as much as possible. Okay, happy new year once again. Thank you for joining. Thank you Divesh, thank you once again. Okay, happy new year everyone. We'll meet tomorrow at the same time with your next lecture on linear algebra and practice questions. Okay, just try to share it as much as possible. Keep sharing, keep learning. Thank you. All the best for your exams. We'll meet tomorrow, and you can also follow me here at Unacademy. Other than that, there's a Telegram channel which is by my name, Arohi Malviya _ ENGG Maths. Okay, so this Telegram channel will help is for your updates on upcoming classes. So you can just join that.
and uh, gets update about the upcoming classes. Thank you. Thanks for watching. All the best.